Good morning, dear students. So, today we will start differentiability and derivative, means differentiation. So, first, last class, what we have done, last to last class probably, continuity of a function at a point and an interval. Here, differentiability at a point and in an interval, both we have to understand. See, differentiation, I believe all of you have done in class 11 and I think in class 12, initial those months, March, April, May. So, you are well versed with differentiation, their properties, rules and regulations. Now, this segment is differentiability. It is just related to like continuity only. And the differentiability and continuity is only possible when you have a very good command in limit. Fine. Now, when we talk about the differentiation, first we have to understand the differentiation. Then we have said that it's a rate change between two variables, correct? And geometrical meaning, we know that differentiation, if you differentiate to the curve at a point, we will get the slope of the tangent to that curve, correct? This is what in general we used to say about differentiation. Fine. Now, differentiability at a point. Suppose we have a one curve y equals to fx. This is one curve y equals to fx. Correct? Now it is written fx be a real valued function is differentiable at a point A, this point A, if and only if limit h tends to 0 fa plus h minus fa upon h exists and finite. Means this limiting value, if it exists and its value is finite, then we can say that a function is differentiable at a point A. Look at this curve. I made it one chord. थोड़ा visibility दिख रही होगी कम, but ये देखिए एक chord यहाँ और एक chord यहाँ पे, ठीक है? अब मैं यहाँ P के coordinate में मैंने लिया है A minus H और F A minus H. थोड़ा A एक point है यहाँ पे Q पे A comma F A. A minus H means very small quantity, left side में लिया और ऊपर मैं R पे लिया हूँ A plus H और F A plus H. F A plus H is y coordinate and A minus H x coordinate, F A minus H y coordinate of this point P, and Q पे there A comma F A. A is x point, F A is the y, correct? So when H tends to 0, P will tend to Q from left, and when H tends to 0, this R tends to Q, means A plus H becomes 0. So it will tend to A. So this R to Q from right to Q I am approaching, and from here left to right I am approaching at Q. So what will happen? These chords become one tangent at Q, and we know that a tangent to the curve at a one point. So this is why that at point Q a function has a tangent, a unique tangent, correct? And their slope is, that is what, tan psi, tan theta or whatever we are, right? So that means that this limiting value fa plus h minus fa upon h comprises your left hand derivative and right hand derivative. Why we call it as a left hand derivative, right hand derivative? Basically this is a limit. Fine, this is a limiting value from left to right. So fa plus h minus fa upon h. So this we know that left hand limit equals to right hand limit, then limit exists. So here I have made it, the name is left hand derivative, where see fa minus fa upon minus h means from here to it will approach to q. So this becomes left hand derivative, and in right hand derivative it will approach from r to q, where a plus h becomes a and fa plus h becomes fe. So fa plus h minus fa upon h. So this is known as right hand derivative. So when left hand derivative equals to right hand derivative, that means this value will exist, because since it is a limit, correct? In limit we have seen left hand limit equals to right hand limit. Same way, so this derivative will exist and finite if left hand derivative is equals to right hand derivative. Then only f dash a will exist. So this is nothing but f dash a, differentiation of a function fx at a point a is equals to limit h tends to 0 fa plus h minus fa upon h. This is also known as
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑल्सो, करेक्ट डियर? सो एक बार आप इसको गो थ्रू कर दीजिए। कर्व को आप थोड़ा ध्यान से समझे। यहाँ पे एक कॉर्ड यहाँ बनाया मैंने, एक कॉर्ड यहाँ बनाया है। जब P लेफ्ट टू Q अप्रोच करता है तो H 0 हो जाएगा, H 0 हो जाएगा। That's why I've written H tends to 0 minus and H tends to 0 plus. So both are equal. Then we can say function is differentiable at a point A. Fine. So it's just like a continuity की तरह ही है, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल और फंक्शनल वैल्यू इक्वल करना होता था। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वी हैव टू इक्वेट। फाइन। सो differentiability at a point when we have to check for any function, what we have to do it? First we will calculate left hand derivative and then we will go to right hand derivative. If both are equal, then we can say function is differentiable at a point A, whatever point if it is mentioned, correct? If it is not equal to, then function is non-differentiable at that point, correct? So just go through till here what I have mentioned. Differentiability, I believe all of you know also earlier. So now look at this. So we came to know that LHD should be equal to RHD, then function is differentiable. Fine here. Now the next part is what I have mentioned here. If a function is differentiable, then it must be continuous. That you have to remember, correct? For this lot of example it is available in the question also, you will come to know. But a function is continuous may or may not be differentiable. Means necessary and sufficient part if you will say, a differentiable implies continuity means a function is differentiable then it must be continuous. Fine. Suppose आप किसी function की differentiability check कर रहे हैं उस point पे, तो अगर वो differentiable है तो it means कि वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे, नो नीड टू चेक। फाइन। बट इफ यू आर चेकिंग फर्स्ट कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट? सो यू हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन आल्सो एट द गिवन पॉइंट, करेक्ट? सो हियर मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। फाइन। थर्ड आई हैड रिटन नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, मींस अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल आल्सो। फाइन। सो ये तीन चीज बड़े इंपॉर्टेंट है जब हमारे मिक्स्ड प्रॉब्लम आते हैं, जब आपको ऑप्शन में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी भी दी होती है, तो उस समय ये तीन बातों की ध्यान बहुत जरूरी है। अगर इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी दोनों है ऑप्शन में, तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें, करेक्ट? सो वंस यू हैव चेक डिफरेंशिएबिलिटी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस होगा। फाइन। सो दीज थ्री टर्म्स that you have to remember. A function is differentiable, that it means it is continuous. If function is continuous, it may or may not be differentiable. Fine. At the end, if function is discontinuous, then it is also non-differentiable at that point. Correct? So there, ये कुछ basic information है to check the differentiability at a point. And I don't think it's very difficult. All of you have gone through limit. You can use L'Hopital rule, you have done continuity, you have seen in continuity also we have used L'Hopital rule. Since this is limit ही है दोनों, तो limit को solve करने के लिए we have very handy tool which is a L'Hopital rule that we will use in problems, correct? हम left hand derivative और right hand derivative equal कर देंगे, function becomes differentiable, correct? So with this note, if you want you can make a screenshot of differentiability at a point. ये डेफिनेशन है। मैंने कर्व को थोड़ा ऐसा किचकिच दिख रही है आपको, बट आप थोड़ा सा इसको बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। ऐसे मैंने कर्व दिखाया, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, एक क्यू यहाँ, पी क्यू और ये आर लिया, ठीक है? ये कॉर्ड यहाँ है, एक कॉर्ड यहाँ है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है? ये टैंजेंट जो इस पॉइंट क्यू से जा रही है, इसका कोऑर्डिनेट आपने a माइनस एच एफ ए माइनस एच कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट a कॉमा एफ ए, ठीक है? और इसका कोऑर्डिनेट a प्लस एच एफ ए माइनस एच। अब ये टेंस करेगा r टू q, h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट। सो ये f कॉमा ये, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, करेक्ट है? सो जब वो अप्रोच कॉर्ड अप्रोच करेगा तो इट विल रीच एट q, सो वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज व्हाट अ टेंजेंट।
ठीक है डियर? सो डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट समझ के लीजिए। प्रॉब्लम्स बहुत आप कंटिन्यूटी से वेल वर्स्ड हो गए हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी में भी सेम यहाँ पे थोड़ी, वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड LHL RHL और फंक्शन वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू चेक करते थे। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा, करेक्ट? सो फ्रॉम हियर वी विल मूव टू problems based on differentiability of a function at a point, correct?